ओके जी, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? व्हाट इज एक्चुअली कोऑर्डिनेशन? आप कह सकते हैं दैट coordination is the synchronization of all the organs and systems of the body to respond to a specific stimulus. किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑर्गन्स का और ऑर्गन सिस्टम का आपस में जो सिंक्रोनाइजेशन होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं. अच्छा, whenever we are talking about coordination, हमारे पास एक स्पेसिफिक पाथवे होता है जो कि फॉलो किया जाता है, और इस पाथवे में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है स्टिम्युलस. स्टिमुलस क्या होता है गाइस? स्टिमुलस इज एनी चेंज दैट takes place in our body. Any specific change of the body is called stimulus. कोई सा भी change environment के हवाले से, that could be either internal or could be either external change. So जो stimulus होता है, the stimulus is actually received by the receptor. The stimulus is received by the receptors, and these receptors actually carry the stimulus to central nervous system. Yes, beta, I know that we are done with this chapter already, but this is actually to revise this chapter, and this is actually, to get over the things once again in a bit more detail. Okay. Acha ji, so right after this, what we have, guys, over here, the CNS actually deliver the message to the effector organ. The CNS deliver the message to the effector, and the effector actually works to generate a specific response. जो भी स्टिमुलस होगा उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है. आप इसको यूं समझ लें कि जो रिस्पॉन्स है वो अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस होगा. यहाँ पर हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, इट कुड बी एनी अदर फीडबैक सिस्टम ना. ये जरूरी नहीं है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही काम करे. हमने तो एक एग्जांपल के तौर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम रखा है. इट कुड बी अ हार्मोनल सिस्टम, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ना दो तरह की है. ये पॉइंट मेंशन करिएगा सब लोग प्लीज. कोऑर्डिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. कोऑर्डिनेशन इज ऑफ टू types, namely number one is nervous coordination, and number two is chemical coordination. नर्वस कोऑर्डिनेशन है, दूसरा आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और ये दो टाइप्स की कोऑर्डिनेशन है. और आपको पता है इनके अंदर मेजरली
हमें डिफरेंशिएट भी करना होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन में और केमिकल कोऑर्डिनेशन. What you need to know over here is नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है आपके पास फास्ट, रैपिड होती है, तेजी से होती है, जल्दी से होती है. Contrary to this, chemical coordination is always slow. लेकिन when you're saying that chemical coordination is slow, chemical coordination is long lasting, whereas the nervous coordination is always short lasting. The chemical coordination is based upon hormones secreted from endocrine glands into blood. Whereas when you're talking about nervous coordination, it depends totally upon electrochemical signals. It depends upon electrochemical signals generated by and transmitted by neurons. The very first thing that we are going to talk about in this particular chapter is nervous coordination. देखो बेटा, nervous coordination करवाने वाला आपके पास nervous system होता है. अच्छा, और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ. That nervous system, क्योंकि system है ना, it is actually made up of nervous tissue. And this nervous tissue is actually made up of nerve cell. Nerve cell का दूसरा नाम होता है न्यूरॉन. हम न्यूरॉन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A neuron is a specialized cell. A neuron is a specialized cell which can, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यूज होते हैं. हमारी बॉडी के अंदर टोटल 4 तरह के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं. मसल सेल, नर्वस सेल्स और एपिथेलियल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स. कनेक्टिव टिश्यू सेल की स्पेशलिटी ये होती है कि वो बॉडी के एक पर्टिकुलर ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से या विद इन एन ऑर्गन कनेक्ट करते हैं, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से. एपिथेलियल सेल्स की ये स्पेशलिटी है कि वो थिन स्पिंडल शेप स्क्वामस लाइक होते हैं और वो कवरिंग बनाते हैं ऑर्गन्स की कवरिंग बनाने वाले एपिथेलियल सेल्स होते हैं. फिर आते हैं आपके पास मसल्स की स्पेशलिटी ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, उनमें प्रोटीन फाइबर्स होते हैं. इसी तरह से नर्व सेल की स्पेशलिटी ये है कि वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, and they can transmit that electrochemical signal. They are able to generate and transmit electrochemical signal. A neuron is a specialized cell which can generate and transmit electrochemical signals. And whenever you're talking about this particular signaling, you need to know, or you need to understand that what actually the structure of a neuron is. The structure of a neuron depends upon what type of neuron you're talking. But in general, let's suppose if we're talking about one of the type of neuron, one of the neuron looks like this.
neuron is having multiple structural components. A neuron is having multiple structural components. It has different parts. एक न्यूरॉन के सेल में अलग अलग पार्ट्स होते हैं. This is how the main cell of neuron looks like. This is the main structural feature of a neuron. That is how it looks like. इसके अलग अलग parts हैं. I'm not saying that exactly ऐसे ही होगा, but to make a good understanding about the structure, that is what we are going to study. Okay? एक न्यूरॉन में इनिशियल पार्ट वो होता है जो इम्पल्सेस रिसीव करता है. The receiver of impulses is called dendrite. फिर एक रीजन वो है जहां पर आपके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं. सेल ऑर्गेनील्स सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं. वहां पे सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है. That region, that part is called cell body और डेंड्रॉन. फिर एक लॉन्ग फाइबर होता है जो कि ट्रांसमिशन करवाता है इम्पल्सेस की. उसको एक्सॉन कहते हैं. There is a long thread like structure, a fibrous long thread like structure which can transmit impulses, that is called axon. The axon could be either covered or it could be either uncovered. The covered one is called myelinated. The uncovered one is called unmyelinated. Guys, you need to understand this कि अगर मैं आपको covered और uncovered एक ही एक्सॉन में शो कर रहा हूँ, that doesn't mean कि दोनों एक ही एक्सॉन का पार्ट होंगे. It could be like कि बस हमारे पास covered अलग होगा एक्सॉन. It is like कि हमारे पास covered वाला एक्सॉन अलग होगा और uncovered एक्सॉन अलग होगा. But what we are going to do is we are going to represent both of them in one particular axon. बेटा आप कुछ कह रहे थे? You were saying something? No? Okay. So I'm just showing like half of its part as covered and the rest of its part as uncovered. Okay? But ऐसा होगा नहीं. This is just to show you guys. Okay? Sir, what does myelinated? Myelinated? Yeah, myelinated. Okay, it is like a sheet which is covering the axon. Axon is covered by a sheet or sheet-like cell, you can say. That is what I'm showing you here. Okay. So the structure which is covering it is called myelin.
इस वजह से हम इसको नाम देते हैं if the myelin structure is present over it, so it's called myelinated, and if it is not present over it, so it's called unmyelinated. Now let's just have a look. What I'm showing you here, मैं तुम्हें एक सेल enlarge तो खैर नहीं कहेंगे इसको, मैं एक सेल तुम्हें ओपन करके दिखा रहा हूँ. ये ऐसे बाइंड हो जाता है, it's just like, you know, it's just wrapped over the cell, just like a strap of, you know, just like a strap of something. So it's just like this, it's a strap, or it's just like a tape like thing that is wrapped around the axon tube, and it is wrapped in segments. It's not completely wrapped over it, rather it's wrapped in segments. बीच में gaps होते हैं. तो जो impulse होती है ना, वो यहाँ पर इन gaps में से jump करके जाती है, like this. जबकि यहाँ पर जो impulse है वो straight जा रही थी. तो जब impulse jump करके जा रही है, देखो मैंने एक वाला इसमें से एक जो माइलिन कवरिंग थी ना उसको अनरैप भी कर दिया, जस्ट टू शो यू दैट हाउ इट्स लाइक प्रेजेंट. इसका काम क्या होता है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर? ये इंपल्स को फास्ट कर देता है. जो यहां से गुजरेगी वो फास्ट इंपल्स गुजरेगी, तो जो यहाँ से जो अनकवर्ड रीजन से गुजरती है वो स्लो इंपल्स गुजरती है. देखो इंपल्सेस वैसे तो खुद ही सारी फास्ट है, सही है, लेकिन जब कवरिंग हो गई तो उसके ऊपर उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है, इतनी फास्ट होती है. और जब स्लो होगी तो उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड तक की होगी, यानी कि 100 टाइम्स का फर्क है. ठीक है. और फिर एक पार्ट इसके बाद एंड में आ जाता है, द एंड पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड एक्सॉन. इट्स कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल. अच्छा जी, now when we are just, you know, labeling the structure, we also need to somewhat define them. Cell body is the main part of the cell which carry all the organelles. You do not need to know about that, Abdullah. It's a bit detailed. That's not up to your level. But still, if you want to know, I can tell you that they are made up of lipid, which are charged, and they have a hydrophilic and hydrophobic end. They are made up of phospholipid bilayer structure. That is the structure of cell membrane, and that is why they're having charges over them. And just because of those charges, the impulse, which is also a charge or an electrochemical event itself, cannot pass through these tunnels, which are covering the structure of axon. But that's not your level to know that how it's speeding it up. But still, I have just mentioned you the same. I hope that you do not understand this. So, what is a dendrite? A dendrite is the part of neuron which receives an impulse. The part of neuron which receives an impulse is called dendrite. Okay. And when you're talking about the long thread-like fiber which transmit the impulse, it's called axon. What is it called? It's called axon. It is either covered or it is either uncovered. Yani ki it is myelinated or unmyelinated. The last part is called axon terminal. When you're talking about the axon terminal, it transmits impulse from a neuron to another neuron. From a neuron to another neuron, it transmits impulses.
यानी कि it is actually helping in the process of synapse. Synapse is a function, or synapse is a junction by which or through which you are transmitting impulse from a neuron to another neuron. You're connecting two neurons by the help of a synapse. So that's all about the structure of a neuron. I hope that all the structural components of the neuron are clear to all of you. And now we're going to talk about the types of neurons. Neuron की तीन types होती हैं. There are three types of neurons, namely sensory, relay, and motor neuron. But to make a good understanding, I'm going to take help from the diagram of nervous system. I hope that you guys understand this thing. I know it's not exactly like what a brain is, but somewhat you guys can rely on the structure. And this is how the structure of a brain and spinal cord looks like. I know it's a bit more far than the actual one, than the real one, but just to make a good understanding. That is how the structure of brain and spinal cord looks like. And to show you the types of neuron, I'll be just making up a cup of hot drink. Okay, we're having a cup of hot drink. And what you did, you just accidentally touch that cup of the hot drink. When you're going to touch that cup of hot drink, obviously what's going to happen? You're going to remove your hand. And it's a quite elongated hand. It's looking so unreal. But just to, make good understanding, nothing else. Okay, तो अब होता क्या है? When you're talking about this structure, यहाँ पर से impulse, obviously ये जो न्यूरॉन होगा ये तो अंदर मौजूद है ना, बट हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं just to make a good understanding. यहाँ पर से impulse कैरी किया जाता है all the way to the spinal cord. अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होने से जस्ट पहले
इसका सोमा मौजूद होता है। ये सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन दिखने में मुख्तलिफ होते हैं बाकी न्यूरॉन्स के मुकाबले। जैसे ये अंदर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसके अपने न्यूरॉन्स मौजूद हैं that are going to, you know, carry the impulse all the way to the higher center, and they're going to, poke our brain that this guy is no more normal. This guy is touching an hot object. Please try to understand, remove the hand. ब्रेन बताएगा कि भाई नहीं, पागल नहीं बनो, अपना हाथ हटाओ वहां से, हाथ जल जाएगा. And then what's going to happen? This person will be actually removing the hand. That's how it is coated by the brain. तो ये हमारे ये impulse जाएगी and it is going to supply to the muscles of various parts of the hand. Okay? And that is how it's working. All the neurons, exactly all the neurons are connected with each other. सबसे पहली चीज क्या थी इस पूरे सिनेरियो में? The very first thing was the stimulus. This stimulus was received by the receptor. रिसेप्टर कहाँ था? रिसेप्टर हमारे उस फिंगर के अंदर था जो हमने टच किया था. That was a thermoreceptor which can sense the heat or the temperature. There was a receptor in that tip of the finger. This receptor is going to carry the message, or it's going to generate the message which is being carried by the very first type of neuron that is called sensory neuron. Guys, what is a sensory neuron? A sensory neuron is a neuron that carries sensation, a neuron that carry sensation from the receptor to the CNS. Yes, beta, it's very much necessary to know the detail about this. This is the very first type of neuron. The second type of neuron that is involved in this whole pathway is the one which is present within the brain and spinal cord. That is called relay neuron. This relay neuron is the one which will be carrying the sensation between sensory and motor neuron. It is present within the central nervous system, CNS, and it connects sensory to motor neuron. But right after this, you have got another one. This another one is called motor neuron. What exactly is motor neuron? A neuron that carry impulses from central nervous system to effector organ. अच्छा, ये कोई sensations नहीं है. Rather, this one is to generate
रिस्पॉन्स। तो ये जो मोटर न्यूरॉन होगा ये इम्पल्स कैरी करके लेकर जाएगा किसके पास, इफेक्टर के पास। और इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर हाथ हटा लेगा। हाथ का रिट्रैक होना, हाथ का यहाँ से हट जाना, पीछे हटना, हाथ को पीछे हटाना, रिट्रैक्शन ऑफ हार्ट कहना, सॉरी, रिट्रैक्शन ऑफ योर हैंड is called response. Just by the way, retraction of heart is also called a response. Acha ji, so let me highlight those particular elements that you actually need to know. You need to know that what is a relay neuron. You need to know about the sensory neuron, and you need to know about the motor neuron. These are the three different types of neurons that you need to work on. Right after these three types of neurons, you also need to understand the reflex arc. You need to understand the reflex arc. What is the reflex arc? It is actually the pathway followed by the neurons to execute a reflex action. To execute a reflex action. This pathway consists of either two or more than two neurons. Most of the time, because we need a rapid response during a reflex action, so most of the time the pathway includes only two neurons. इसमें दो न्यूरॉन कौन कौन से होते हैं, एक रिसेप्टर, उसके बाद एक सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के बाद एक मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन आ गया यानी कि रिले न्यूरॉन नहीं आया, और उसके बाद डायरेक्टली इफेक्टर, यानी कि इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही साइनेप्स इन्वॉल्व किया है। This process is called, this particular process is named as this particular, not the process, sorry, this particular pathway is called monosynaptic pathway. जबकि अगर मैं कहूं कि यार पाथवे को आप कर लें थोड़ा सा एक्सटेंड, तो यही पाथवे आपके पास बन जाएगा, लेकिन यहाँ neurotic pathway इसमें क्या ऐड होगा, देखो, have a look. Right after the sensory neuron, we might be having relay neuron. जब relay neuron आ जाएगा, जब relay neuron आ जाएगा, तो बेटा obvious है, it's very much obvious कि आपके पास synapse भी, synapse क्या होता है, what is a synapse?
A synapse is a junction of two न्यूरॉन. जब इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जंप करती है तो इस जंक्शन को आप साइनेप्स कहते हैं. तो भाई हमारे पास एक पाथवे है मोनोसाइनेप्टिक पाथवे जिसमें सिर्फ एक साइनेप्स हो रहा है. हमारे पास दूसरा पाथवे है पॉली साइनेप्टिक पाथवे जिसमें एक से ज्यादा साइनेप्स हो रहे हैं. एंड what you need to understand further on this, that what actually a reflex action is. हमें समझना पड़ेगा कि एक रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है. गाइस देखो, एक रिफ्लेक्स एक्शन ना एक सडन इनवॉलेंटरी एक्शन है. इट्स अ सडन, इट्स अ लाइफ सेविंग, इट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, and it is involuntary, यानी कि हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं है. जैसे उसी गर्म कप को अगर आप हाथ में पकड़ लेते और वो बहुत तेज गर्म होता तो आपको पता नहीं चलता, वो आपके हाथ से छूट जाता. It is sudden, life-saving, and it is during emergency condition. Involuntary response. Reflex action actually do not involve higher center of brain. कभी कभार तो ब्रेन को भी इन्वॉल्व नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से घूम के इम्पल्स वापस आ जाती है. ब्रेन को भी इन्वॉल्व नहीं करता ये. ठीक है. So guys, that is all about the reflex action. That's all you need to know about the reflex action. It's a sudden life-saving involuntary response. Okay. I hope that the reflex arc and the reflex action is clear to all of you. It's all about